sea level rise and increase in temperature and very huge model showing its commitment in climate preservance. So when it comes to Maldives, we are looking forward to make our country carbon neutral by the end of 2030, and we are trying to plant more than 5 million trees, and we are trying to limit or stop in certain plastics or plastic materials, single-use plastics and other plastics and other things which we are doing and showing the whole world that we are doing our best in our capabilities to preserve the environment and climate. And so we are telling the international community, you also do the same and help protect Maldives from having very bad consequences in future. Can you share with us any cooperation in this regard from United Nations concerned their agencies for climate change and preservation, and also from the international community? To give more support in future, to be with us, and we are also showing our commitment for this for this purpose, for this noble cause, and give us more support and more aid, be it financial or other means, so that Maldives remains beautiful as the sunny side of life. Yes, sure. Yes. High Commissioner, I want to discuss with you the future of SARC. And Maldives is an important member of this organization that consists of the states in the South Asia. But this organization could not be activated in a sense for which it was established, for the close cooperation between the members of South Asia. We have example of European Union, we have example of ASEAN near to SARC, Yes. that they built their close cooperation, they eliminated their disputes, and they flourished, and they developed their economy. What do you see, why SARC could not be activated like ASEAN, like SCO, etc.? I think anybody who research into this topic will find the facts on this matter. But the main thing I would like to highlight is that, as you mentioned, SARC, I find it as a very important organization. SARC, in my view, should be activated, and all the people, if they collaborate together, I find that they can benefit from each other and maintain stability. So for Maldives, and in my own personal view, I find that activating SARC is a very useful thing which we must do. Yes. Yes, sure. And coming back to Pakistan, Maldives, which commonalities you have observed so far between our people and your people? Commonalities in dressing, commonalities in living, commonalities in food, etc. Very interesting question. I find many commonalities, many similarities. For example, I would say we Maldivians eat rice and wheat, flour. And Pakistani more rice or more wheat? It's balanced. Because in Pakistan we think that wheat is more energetic and Yes. gives you more nourishment than rice. I think it's personal preference in Maldives. Yes. So some people might eat more rice than wheat, and I think that's one similarity in terms of food.
And you have this roti. We have roshi. Roshi. Yes. And you make like chicken and mutton kadai. We have tuna kadai. Like what we say as kulimas in our own language. So we have similarities. We have similarities in terms of obviously the religion. We have similarities, and the people that dress, the women especially, how they dress. In the past, women in Maldives used to dress very similar to Pakistanis. So it's a very similar thing which we have. And I think there are other things in culture which are which have commonalities and similarities. And Maldives is also very hospitable as Pakistan, very hospitable and very welcome in nature towards foreigners. So it's also a similarity which I can find. Anyhow, I feel. What about weather? Weather. How many weathers? In terms of weather, it's not so similar because Maldives lies very close to equator, or on the equator to be exact. So Maldives climate is a tropical climate which is almost the same throughout the year. When in Pakistan you see the 4 seasons, right? Yes. The winter and everything you have. So in terms of weather, it's not similar. Yes, Pakistan is a little bit more hot weather than Maldives. Football, and they watch football. You know, if there's a tournament or anything, they will wake up to watch football matches in the cinemas and in cafes and restaurants. They have big screens. They watch different games in football. Yes. ओके हाई कमिश्नर, थैंक यू फॉर योर टाइम। और नाजरीन सामीन, हमने बात की मालदीव्स पाकिस्तान रिलेशंस के ऊपर। इसके जो अहम पॉइंट्स हैं वो हम उर्दू में कैप्शंस के साथ इस इंटरव्यू के साथ चलाएंगे, ताकि हमारे वो नाजरीन जो कि उर्दू समझते हैं और इंग्लिश नहीं समझ सकते, उनको भी इस इंटरव्यू के मेन जो पॉइंट्स हैं उनसे आगाही हो सके। पाकिस्तान मालदीव्स जिंदाबाद। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान। हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि मज्जा दियां भैणां होंदियां, तो उसी तरह दुनिया में डिप्लोमेटिकली शहरों को आपस में बहनें बनाया जाता है। हम कहते हैं इसको जुड़वां शहर उर्दू में, जैसे रावलपिंडी इस्लामाबाद को हम जुड़वां शहर कहते हैं। हमारे नाजरीन को ये बताएं कि सिस्टर सिटी, पहले तो इसमें ये है कि कौन कौन से शहर हैं जो इस्लामाबाद के साथ सिस्टर सिटी बन चुके हैं, पहले उनके हमें नाम बताइए। सबके नजर अंदर की खबर। मगरबी यूरोप में हर साल वक्त 2 बार तब्दील होता है। नेशनल बायोलॉजी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक वक्त में तब्दीली के बाद मुहलिक ट्रैफिक हादसात और हार्ट अटैक के हमलों में भी नुमाया इजाफा देखने में आता है। पलवशा इकबाल, A1 TV, इस्लामाबाद। A1 TV, सब पे नजर अंदर की खबर। A1 TV, सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं शाबाशी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज रकम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को जदीद बनाने पर खर्च की जाएगी। डेविड मिलर का लाठीचार्ज, जॉर्ज लिंडा की ऑलराउंड परफॉर्मेंस। जनूबी अफ्रीका ने पहला T20 11 रन से जीत लिया। कौमी टीम 184 रन की ताकुब में 172 रन बना सकी।
फैज हमीद को बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी का इल्जाम, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया। इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल का भी इल्जाम। मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में अलहदा तफ्तीश। 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद वाक़यात की भी तफ्तीश। सियासी अनासर से मिलीभगत की भी तहकीकात। सिविल नाफरमानी की कॉल, मुल्क दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, बोले मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। और फैसलाबाद में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। गाड़ी पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल बरा था।